बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक के अंदर आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंटीग्रेटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस है। अपने कुछ पिछले लेक्चर्स में हमने प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया था और समझने की कोशिश किया था। आज के इस लेक्चर में हम इन प्रिंसिपल को थ्योरेटिकली और प्रैक्टिस में ये कैसे इंटीग्रेट हो सकते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। Community organization is mean and not an end. Community organization is a process by which the capacity of community to function as an integrated unit is enhanced. In this sense, it is method or a mean to enable people to live a happy and fully developed life. Community organization जो है ये एक mean है, ये एक process है, ये चलते रहने वाला अमल है, ये एक end नहीं है. It refers to a method or intervention whereby a community consisting of individual groups or organizations is helped to engage in planned collective action to deal with their needs and their problems. Community organization should promote community solidarity and the practice of democracy. It should seek to overcome disruptive influences that threaten the well-being of the community and the vitality of democratic institution. In community organization, discrimination and segregation or exclusion should be avoided, and integration and mutual acceptance should be promoted. वही बात कि माशरे के जिन सेगमेंट्स को हमने आइसोलेट किया गया है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम उनको कम्युनिटी का मुफीद शहरी मुफीद पार्ट बनाने की कोशिश करते हैं. The clear identification of community. Since the community is the client, जब हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं तो कम्युनिटी को एज अ क्लाइंट लेते हैं. सिंस द कम्युनिटी इज अ क्लाइंट ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन वर्कर, द कम्युनिटी मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफाई. इसका मकसद क्या है? हमें पता होना चाहिए कि कम्युनिटी की क्या बाउंड्रीज हैं, हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, किन लोगों को हमने केटर करना है. इट इज़ likely that there are several communities within which the worker deal at the same time. Further, it is important that once the community is identified, the entire community must become the concern of the practitioner. No program can be isolated from the social welfare needs and resources of the community. The welfare of the whole community is always more important than the interest or well-being of any agency group in the community. Fact finding and need assessment. Community organization program should have their roots in the community. क्योंकि आप community में as a community organization जाते हैं, community organizer के जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी जो है उनको assess करते हैं, तो आप first hand knowledge लेते हैं. Proper fact finding and assessment of community need is the prerequisite for starting any program in the community. So जब यहाँ पर हम प्रिंसिपल को इंटीग्रेट कर रहे हैं प्रैक्टिस के साथ, जब आप कम्युनिटी में जाते हैं नीड्स को देखने के लिए, जब एक्सेप्टेंस के लिए जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, जब आप लोगों से इंटरैक्ट करते हैं तो आपको लोगों के प्रॉब्लम्स का पता चलता है और फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलती है. Identification, mobilization and utilization of available resources. The fullest possible use should be made of the existing social welfare resources before creating new or additional resources or services. In the absence of resources and services, the worker must mobilize the resources from various sources such as the community, government, non-government agencies, etc. हमें एज अ कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र, मोबिलाइज़र, जब हम लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो पहले नीड असेसमेंट करते हैं, कम्युनिटी के अंदर उसके रिसोर्सेज को देखते हैं, और अगर कोई ऐसा हमें किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो कम्युनिटी के अंदर अवेलेबल नहीं है तो फिर हम बाहर डिफरेंट सेगमेंट्स को अप्रोच करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट हो गई है या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो जाती हैं. While utilizing the indigenous resources, it must be recognized that these resources may sometimes need extensive overhauling before they can meet the felt needs. Apart from mobilizing physical resources, indigenous human resources should also be optimally
harnessed. Participatory planning. The community organization worker must accept the need for participatory planning throughout the process of community organization. It is important that the practitioner prepare a blueprint of what he or she intends to do with the community in the beginning phase itself. Again, वही planning की बात है कि आपने proper planning की होनी चाहिए before starting any program. Active and vital participation. The concept of self-help is the core of community organization. मैं हमेशा ये बताती हूँ कि self-help, अपनी मदद आपके तहत, ये core है community organization का. The community members' participation throughout the process of community organization should be encouraged from the standpoint of democratic principle and feasibility, meaning the direct involvement in the program of those who have the primary stake in the results. यानी उन तमाम लोगों की पार्टिसिपेशन को इंश्योर करें, उनको मोटिवेट करें जिनको उससे फ़ायदा होने जा रहा है. Voluntary cooperation. Community organization should be necessarily based on mutual understanding, voluntary acceptance and agreement. If the process must be in harmony with the democratic principle, it cannot be regimented or imposed from outside. It must be derived from the inner freedom and will to unite those who practice it. तो voluntary cooperation जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. इसको समझने के लिए आपको बार बार प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस के साथ इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है कि कैसे प्रिंसिपल्स को हम प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.